Student, today we will learn chapter 4 जनार्दनस्य पश्चिम संदेश तो फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। तो उसमें हम आज आगे देखेंगे कटुच कचम शांतम पापम राक्षस्योप्योपि पवंत एव क्रूरतया कुतः न तु चतुगुहे सुप्तान प्रातुन दहन्ति निशाचरा शिरसीन तथा भ्रातु पत्नी स्पृशन्ति निशाचरः। दुर्योधन दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः गृहीत्वा गच्छं संदेशं न वयं दूतघातका। कटोजकच सरोषं किं दूत इति मा प्रकर्षयसि मा तावत् भो न दूतोऽहं प्रहरध्वं समाहता सर्वे उत्तिष्ठन्ति। धृतराष्ट्र पौत्रं कटोजकस् मर्शयतु भवान् मदवचना वगन्ता भव। कटोजकस् भवतु पितामहस्य वचनात् दूतोऽस्मि भो राजन् श्रूयता जनार्दनस्य पश्चिम संदेश धर्मं समाचरं कुरु स्वजनव्यपेक्षा यत्काक्षितं मनसि सर्वमिह नातुष्ठित। जात्योपदेश इव पांडवरूपधारी सूर्यांशुभिः सम उपेष्यति वह कृतांत। तो आगे हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। कटुजकस शांतम पापम राक्षसेभिः पवंत एव क्रूरता कुतः। Having forbid, you are much more ruthless than demons because. Having forbid, you are much more ruthless than demons because. न तु जतुगुहे सुप्तान भ्रातुन दहन्ति निशाचराः शिरसीन तथा भ्रातु पत्नी स्पृशन्ति निशाचराः। The demons do not burn their brothers asleep in a house of lake. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. The demons do not burn their brothers asleep in a house of lake. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. दुर्योधन दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धमार्गत गृहीत्वा गच्छं संदेशं न वयं दूतघाता। Duryodhan says, you have indeed come here as an envoy and not to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. Katochkach सरोषम angrily किम दूतम इति मा प्रकर्षयति। Are you insulting me saying that I am an envoy? मा तावतु भो No, indeed. न दूतोऽहम् I am not an envoy. प्रहरध्वं समागत सर्वे उत्तिष्ठ्यम् Strike me all together. All get up. Katochkach angrily, are you insulting me saying that I am an envoy? No, indeed. I am not an envoy. Strike me all together. All get up. फिर से यहाँ से देख लेंगे कटोचकच
Having forbid, you are much more ruthless than demons because the demons do not burn their brothers asleep in a house of lack. Similarly, the demons do not touch that way the head of brother's wife. Duryodhan, you have indeed come here as an envoy and not to fight. Take your message and go. We are not those who killed the messenger. Ghatotkacha, angrily, are you insulting me? Saying that I am an envoy? No, indeed, I am not an envoy. Strike me all together. All get up. नेक्स्ट देखेंगे कटोचकच। भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतोऽस्मि भो भो राजन श्रूयता जनार्दनस्य पश्चिम संदेशः। कटोचकच सॉरी, हम आ गए एक लाइन, सेंटेंस भूल गए हैं। धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच मर्षयतु भवान् मदवचनात् वगन्ता भवः। धृतराष्ट्र घटोत्कच, माय ग्रैंडसन, प्लीज forbear. Pay heed to what I am saying. Ghatotkacha, my grandson, please forbear. Pay heed to what I am saying. Ghatotkacha, all right, let it be. I am an envoy at grandfather's word. Bhavatu bhavatu means all right. पितामहस्य वचनात् दूतोऽस्मि. Let it be. I am an envoy at grandfather's word. भो भो राजन, O you king, श्रूयता जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. Listen to the final message of Sri Krishna. धर्म समाचार कुरु स्वजनव्यपेक्षा यत्काक्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठम् जात्योपदेश इवं पांडवरूपधारी सूर्याशुभिः सममुपेष्यतीव कृतान्त. Do what is right, fulfill the particular expressions of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all that here in this world, for with the rays of the sun death in the guise of Pandavas, as if it was the most excellent advice, will come upon you. Ghatotkacha, all right, let it be. I am an envoy at grandfather's word. O you king, listen to the final message of Sri Krishna. Do what is right, fulfills the participate expressions of brothers. Whatever is deserves in your mind, do all that here in these words, for with these rays of the sun that in the guise, O Pandavas, if his most excellent advice will come upon you. तो इसका ट्रांसलेशन हम फिर से आगे देख लेंगे एक बार। पौत्र घटोत्कच, वहां से धृतराष्ट्र घटोत्कच, माय ग्रैंडसन, प्लीज forbear. Pay heed to what I am saying. Ghatotkacha, all right. Let it be. I am an envoy at grandfather's words. O you kings, listen to be the final message of Sri Krishna. To what is right, fulfill the particulars, expressions of the brothers. Whatever is deserves in your mind, do all that here in this world,
for with the rays of the sun death in the guise of Pandavas, as if it was the most excellent advice, will come upon. नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यदुकुल प्रवाह कहो। उसमें फर्स्ट है घटोत्कच, अर्जुन, अभिमन्यु, दुर्योधन। उसमें आंसर आएगा, आंसर इज सी, अभिमन्यु। नेक्स्ट वन इज अभिमन्यु कस्य पुत्र आसीत। अभिमन्यु कस्य पुत्र आसीत? ए जनार्दनस्य, बी धृतराष्ट्र, सी अर्जुनस्य और डी शकुने। उसमें आंसर आएगा सी, अर्जुनस्य। थर्ड वन इज अभिमन्यु मातुलः कः। फर्स्ट है दुर्योधन, सेकेंड है शकुनी, थर्ड है जनार्दन और फोर्थ है घटोत्कच। तो आंसर इज सी, जनार्दन। फोर्थ, शांतं पापम इति क वदति। तो उसमें फर्स्ट है ए घटोत्कच, बी धृतराष्ट्र, सी शकुनी और डी अर्जुन। आंसर आएगा ए घटोत्कच। फिफ्थ वन इज वयम दूतघातका न। इदं वाक्यम केन कथयति? फर्स्ट ऑप्शन इज दुर्योधनेन, सेकेंड वन इज घटोत्कचेन, थर्ड वन इज शकुनीना और फोर्थ वन इज धृतराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज चक्रायुध च। चक्रायुधः कः? फर्स्ट वन इज अभिमन्यु, सेकेंड वन इज जनार्दनम, थर्ड वन इज धृतराष्ट्र और फोर्थ वन इज शकुनी। तो उसमें आंसर आएगा बी, जनार्दन। सेवंथ, भवन्तः अपि क्रूरतराः। ए राक्षसानो, बी राक्षसे, सी राक्षसेभ्यो और डी राक्षसेषु। आंसर इज सी, राक्षसेभ्यो। 8, कृतान्तः शब्दस्य क अर्थ। कृतान्तः शब्दस्य क अर्थ? फर्स्ट वन इज पांडवः, सेकेंड वन इज सूर्यः, थर्ड वन इज यमराज और फोर्थ वन इज नष्टः। तो उसमें आंसर आएगा सी, यमराज। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। घटोत्कचः कस्य संदेशो नयति? आंसर इज घटोत्कचः जनार्दनस्य संदेशं नयति। सेकेंड वन इज अभिमन्यु कम द्रष्टुं स्वर्गम अभिगत। आंसर इज अभिमन्यु पितामह द्रष्टुं स्वर्गम अभिगत। थर्ड वन इज पुत्र सुप्तान भ्रातून निशाचराः न दहन्ति। आंसर इज चतुगृहे सुप्तान भ्रातून निशाचराः न दहन्ति। फोर्थ वन इज घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतो भवति? आंसर इज घटोत्कचः जनार्दनस्य वचनात् दूतः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन 3, अधोलिखिताना कृदंताना प्रकारम लिखत। फर्स्ट वन इज श्रोतव्य, वित्यर्थ कर्मणि कृदंत, व्य पीछे हमें देखना है व्य, तो उसमें वो आएगा वित्यर्थ कर्मणि। सेकेंड वन इज परित्यज्य, तो उसमें आएगा संबंधक भूत कृदंत। थर्ड वन इज अभिगत, उसमें आएगा कर्तरी भूत कृदंत। फोर्थ वन इज उपसृत्य, उसमें आएगा संबंधक भूत कृदंत। फिफ्थ वन इज दृष्टुम, उसमें आएगा हेतवर्थ कृदंत, दृष्टुम तुम
या फिर तुम होता है तो वो हेतुवर्थक कृदंत में आ जाता है। 6th, कांक्षिकतम कर्मणी भूत कृदंत। नेक्स्ट हम देखेंगे संधि विच्छेद। तो कटोत्कचोहम, कटोत्कच प्लस अहम। सेकेंड वन इज शकुनी रेशोह, शकुनि प्लस एश। थर्ड वन इज दूतोस्मि, दूतः प्लस अहम प्लस अस्मि। फोर्थ वन इज दूत इति, तो उसमें आएगा दूतः प्लस इति। नेक्स्ट हम देखेंगे रेखांकित पदास्थाने प्रकोष्ठ उचितं पदम चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। उसमें कस्य, केनो, कीदृशा, कम, किमर्थम। फर्स्ट दिया है घटोत्कचः पितामहम अभिवादयति, तो उसमें फर्स्ट आएगा घटोत्कचः कम अभिवादयति। सेकेंड वन इज त्वम युद्धार्थम न आगत, उसमें आएगा त्वम किमर्थ न आगत। थर्ड वन इज वयम दूतघातका न, वयम कीदृशा न। फोर्थ वन इज जनार्दनस्य पश्चिम संदेशो श्रोतव्य, कस्य पश्चिम संदेशो श्रोतव्य। आंसर इज गिवन हियर 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट हमें यहाँ दिया है धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवस, तो धृतराष्ट्र कौरवन जनक असो, धृतराष्ट्र कौरवाणा जनक आसीत। सेकेंड, घटोत्कच ब्रिंग्स द मेसेज ऑफ जनार्दनम, घटोत्कच जनार्दनम संदेश आनी न, तो घटोत्कच जनार्दनस्य संदेशम आनयति। थर्ड वन इज वी आर नॉट द किल्स ऑफ एन इनवॉइस, अस्मद् दूतघातक न, वयम दूतघातका न। फोर्थ वन इज घटोत्कच गो टू धृतराष्ट्र, घटोत्कच धृतराष्ट्र प्लस नमो, घटोत्कच धृतराष्ट्र प्रणमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखिताना प्रश्नाना उत्तराणि आलंग भाषाया लिखित। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू डू। घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू गिव अप द गेम ऑफ डाइस and be prepared to fight with the arrows. Second one is why does Ghatotkacha call Duryodhana more cruel than a demon? Duryodhana tried to burn his own brothers Pandavas in a house made of lacquer. Even a demon would not do such a cruel things. Quoting this, ill did Ghatotkacha call Duryodhana more cruel than even a demons. Next one is describe Arjun's lamentations of Abhimanyu's death. Lamenting the death of Abhimanyu in the battlefield, Arjun says, alas, O son, the burning lamp of the Kaurava,
Dhyanis the sins of Yadukul and leaving your mother Subhadra and myself, you went to meet your grandfather in the heaven. नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट इन इंग्लिश। तो उसमें हमें फर्स्ट दिया है कैरेक्टर ऑफ घटोत्कच। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सन ऑफ डेमons, Hidimba, Ghatotkacha behaves like a perfect gentleman. He does not forget to mention the elders like Yudhishthir when he bows down to Dhritarashtra. He shows his respect for Dhritarashtra for thereby describing him as the source of all auspicious things. While taking with Duryodhana and Shakuni shows his skills in repeating all throughout the scenes. Ghatotkacha wins our sympathy and respect. Second one is message conveyed by Sri Krishna. Ghatotkacha conveys Sri Krishna's message to Dhritarashtra, first and final message to all Kuru princes later. In the first message, Sri Krishna warns the old king Dhritarashtra about the grim futures of losing 100 sons and asks him to be prepared. In the final message, Duryodhana and other princes are told that death would come upon them with the rise of the sun. Lord Krishna's message being with short, being sentence dharma samachara, to what is right, have regard for your kinsman, and the third sentence, whatever is your desires, fulfill. Here on the earth prepares us for the final climax. Death will come upon you with the rays of the sun. Next one is write short note in English about Dhritarashtra. First one is Dhritarashtra, Dhrum Rashtra Ena Saha, Bahuvrihi Samaj. He was the father of 100 sons, etc. Kauravas and 1 daughters, Tushala. He had been blind since his birth. Ghatotkacha calls him the father of 100, ignoble. Father of the 100 ignoble sons. Next one is Abhimanyu, the light of Kuru race. Abhimanyu, the light of Kuru race. Abhimanyu was the son of Arjuna and Subhadra, the sister of Lord Krishna. He was very brave. And illustrious, so he was rightly described by Arjuna as Kurukula Pradipa, the light of Kuru race, and Yadukula Pravaha, the siege of Yadu race. He was killed by the Kauravas in an unjust manner, so Arjuna decided to kill Jayadratha, who was responsible for Abhimanyu's death. Next one is Janardana. Janano Adaryati iti upapada tatpurusha samacha. This is one of the many names of Lord Krishna. It is significant since it means one who kills the weak, and the message sent to Dhritarashtra indicate the destructions of Kauravas.
Next one is Shantam Papam. The praise is used by the characters in the play when the person does not find it worthy to listen to the words spoken by the other characters. It means literally let the evil be pacified or averted. It is like God forbid or don't say so. तो ये था हमारा चैप्टर 4 का एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।